Morning, everyone. Any questions from what we discussed in the forecasting? Hello, am I audible? Yes, you are audible. Morning. So, in case no questions, so हमने business model discuss कर लिया ना, ठीक है? And then the next step is identify the drivers. So when you say drivers, so कौन सा business model हमने किया था इस batch में discuss? Which example we did discuss? If someone can help me to recollect. Starbucks. The last we have discussed was Starbucks. Yeah. So now once you identify, so once you suppose understood the business model of Starbucks, now when you said drivers, driver means what are the variables which will impact their sales and their profit. Okay, we need to list down those top 2-3 variables which will impact their sales and profitability. हाँ जी, take a minute, think through this. कि आपके हिसाब से क्या सबसे इम्पोर्टेंट वो वेरिएबल है या वो सिनेरियो है या what will have a significant impact on the sales or the profit of this company or this business that we discuss, which is Starbucks in this example. Anji, what variables will have an impact? Change in their USP means what the selling, what they are selling is ambience. If something and all will change, they don't provide that ambience and all that. Or you want to have a means input change or not. Okay, so you're saying the change in their business strategy, correct? ठीक है, तो जो तो change in business model is strategy हो गया और let me give an example. So for example, this the uh, the macro environment, अभी कोविड को छोड़ दो, ठीक है? So let's first understand prior to COVID. So macro environment for economic growth, startups, corporates,
मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल है स्टारबक्स की ग्रोथ का या बिजनेस का, बिकॉज most of these Starbucks drives their higher revenue from the corporate oriented clients. So yes, so when I say corporate oriented client, what I mean is uh, um, your you wanted to have a meeting with your clients, or let's assume कुछ आपको official discussions करने हैं. So this is one. Second is driven by your standard of living, the social impact. Okay. So I think because majorly two categories of customers is what you get. One is those who coming from the corporate side, and then those who coming from non-corporate side. So those who are coming from non-corporate side, for them to afford that is this is important. Okay, so for example, if India में corporate growth बंद हो जाए, ये पैरामीटर हट जाए, do you think it will have an impact on the Starbucks revenue? Yes. That's what I mean by drivers. Okay, अभी के example ले लो. So because a lot of people have, because of this pandemic, a lot of offices have cut down their presence of their employees in their office premises. They have cut down on the in-person meetings with the clients, cut down those catch-ups with the clients, those events जो होते हैं, टीम मीटिंग्स होते हैं, वो सब बहुत बंद कर दिया है, almost operating at bare minimum level right now. ठीक है. So what does it mean that this creates a dent in their revenue, because Starbucks, as we discussed, is not selling coffee. They're trying to sell that ambience. और अगर आपको in a current scenario of this pandemic, because of this pandemic, if you're not going and meeting too many people, or your company has adopted a strategy of operating at a minimum level, then of course this would have an impact. So this is what I mean by drivers. So similarly, the driver could be, another driver could be the usage of internet, technology. No, technology I would keep it. See, I would say use of internet, which is again to me linked to the same point. So these are the drivers. So for example, I would not say taste. I will not say taste. I will not say marketing, advertisement for them, because they don't do all these things, correct? Some of the other companies जहाँ पे advertisement is a high driver, वो advertise करते हैं, drive करते हैं. So let me give you an example. आपने सुना है during this IPL season, the recent IPL season, and आपने Dream 11, My 11 करके कुछ have you heard of this? Yes. And then I think Yes. एक और Many levels. हाँ, Dream 11 था, एक My 11 था, My 11 circle. हाँ, ऐसे दो तीन आई करेक्ट. And I would not get into the business model of these, but what I'm trying to say, think of those businesses. Now, उनके drivers क्या हैं? उनके drivers is the biggest driver for them is the marketing and the advertisement expenditure. Because if you're going and getting these Dhoni, Virat Kohli, Saurabh Ganguly, Watson, some of these players at an international level, and some of these big
shots getting as your brand ambassadors, and then you're pushing your ads through those IPL season, correct? Through some of these in a very expensive advertisement slots, depending on which match they are looking at, correct? Now, all this is what I hope you understand. This is expenditure, correct? If I have to go and get Virat or Saurav Ganguly as my brand ambassador, so that's itself is a very very expensive affair. Not only that, then pushing the advertisement on air in a final of an IPL, then of course becomes a more expensive affair. क्योंकि ये businesses ऐसे हैं जिनको advertisement करना ही पड़ेगा तभी जाके revenue आएगा. When you're looking at Starbucks, मैं Starbucks एक वाले example में marketing को driver नहीं डाल रहा हूँ. For me, the drivers are these things. Similarly, let's assume, think of a very very good restaurant जहाँ का taste की वजह से बहुत famous and you just go to the restaurant because of the taste. Now, but so वहाँ पे उसका जो driver है taste है because customer वहाँ taste कैसे, but as we discussed in some of the previous classes, Starbucks we've discussed correct that it's not the coffee or the taste for which they get their customers. So I hope you're understanding when I say drivers. Uh, is this clear? And that's the reason I'm not putting this taste, advertisement, marketing strategy, brand ambassador, ये सब चीजें मैं नहीं डाल रहा हूँ एज ड्राइवर. Is this clear in terms of when we say we are looking at the second step in terms of drivers? What does it mean? Okay. So what we do, you list on all these drivers. So how many uses of internet की बात किया, and then let me put COVID as well. And I think not only that, honestly, अगर मुझसे पूछो तो I would say after COVID as well, because it's very very much possible that things will change after COVID, even if when this pandemic goes back, and medically the things come back to the normal. I think things will still not remain normal, because whenever I have been discussing, I've got those opportunity to discuss with the big strategy think tank across the corporates. I'm getting the same sense that things will not remain normal the way it used to be before COVID, even when this gets over. Okay, so without getting too much of those pieces into the strategy side, but I'm just trying to tell you an example that yes, for me, if I have to put the drivers as the COVID and after COVID impact, what it will bring in, especially into these parts, we don't know. So just an example, for example, some of the corporates have already announced their permanent work from homes, correct? So they don't give a damn care now whether when the COVID will get over. So they have announced. I think I read. I think it was TCS or Info. I think one of those company. TCS. TCS. it is. Yeah. No. I don't remember, but I read in the newspaper, I think a month or a little more than that. They permanently announced for the employees to work from home. So just think of an example. So It's not permanent. They're told that till 2024. 2000. 2024. हाँ, so permanent ही है ना. आपको क्या लगता है उसके बाद रिज्यूम करा देंगे? उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा. So 2024 is not. It will all be seen after what will be the impact on business from work from home, because right now they are being forced because of this event. करेक्ट. तो 2024 तक लेट्स से अभी कोविड चला जाता है, उसके बाद दे विल से कि 2024 तक देख लो, उसके बाद if things continues to be the way they expect, then
what you're expecting? Are you expecting them to continue? Correct. That's what I said, permanent, and it will happen on those lines. Don't worry. ठीक है. अभी कोविड नहीं है, अभी कोविड है, then people are still able to operate work from home when you do not have you don't have support, correct? Support in the sense of your cooks, your maids, your drivers, your gardeners are not coming to your home. So all those support हटा रखी तब भी आप work from home operate कर पा रहे हैं, correct? So I have no doubt in at least I am convinced because a lot of corporates have started having these discussions from a strategy perspective. Uh, is it possible to work out into this model or not? And believe me, you will see a lot of companies coming out and rolling out this. And of course, from from a business strategy perspective, you will not always, and you will never announce in the market and say permanent. You will always announce like this, okay, next 2 years, next 3 years, and then you will assess the situation and probably will roll it over because that's the way you would want that message to go out. But think TCS, for example, TCS. I was speaking to somebody. There's a huge investment that will go in now because let's assume if currently TCS gives a monitor to their employee, now this monitor has to be replaced with a laptop, correct, to support this work from home. And there's there's some other infrastructure cost that needs to be replaced. Okay, so for example, currently if you're a TCS employee, you go to the office, you get a monitoring PC, a kind of a PC, CPU on your office desk. Along with that, you get a landline phone, and another some of the other supports from an infra perspective before you kick off. ठीक है, वो आपको फ्लोर पे मिलता है आपके. ठीक है, ये सब चीजें हटा के आपको घर पे मुझे सब चीजें देनी पड़ेंगी. ठीक है. So there is an investment which is involved, and believe me, no organization will do that for next 2 years or next 3 years because these investments will only make return if you continue to operate for larger tenure. So my sense is it will continue. But even if I uh, go with the exact communication that's been announced, कि ठीक है 24 तक है, तब भी it will have an impact till 24 on the so think of TCS का कोई बड़ा अगर ऑफिस है या TCS का कोई अगर बड़ा कैंपस है, आई थिंक बैंगलोर हैदराबाद में दे हैव वन. सो उसके आसपास जो भी स्टारबक्स के आउटलेट होंगे, बिकॉज TCS is a massive employer, correct, in India. Their employee count is very much on the high side. So उतना जो टारगेट कस्टमर है उतना तो चला गया ना नीचे, because if they work from home till 24 or whatever is the time, that is going to have an impact on the sales of the Starbucks. That's from one organization. Just think if few more big organizations starts rolling out this, then it will have an impact on the Starbucks sales. And that's why we're saying this is one of those drivers for them. Because I don't think Starbucks will operate on the model of free home delivery, correct? I don't think that will operate for them because as we discussed, free home delivery will work where you're interested in the food or you're interested in that product that's get delivered to your place. But in this example you discussed, we are not interested in the food or the product. We are interested in what's the ambience that we get in. और वो ambience घर पर deliver नहीं हो पाएगा. And that's why if this work from home or this new uh, जिसको new normal बोला जाता है in corporate language, corporate lingo. So if that continues for a large period of time, so it will going to impact the businesses which operates in very similar model of Starbucks. ठीक है. Any other driver that you can think of other than जो मैंने left side में लिखे हैं? Any other driver that you can think of? Some of the temporary drivers जो होते हैं जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, for example weather. Some of the sometimes some of the students give me this example of weather. For example, northern part of the country, the weather becomes very cold, and then you tend to consume coffee. So I'm just trying to say मैं इनको नहीं रखा because those are seasonal, वो go on and off चलते रहते हैं. ठीक है.
So वो होगा, but probably very much lower in the list, not in the top part of the list. Any other driver that you can think of? Change in business strategies has inside have many drivers. Like in the last we were discussing about coffee versus tea versus they can introduce cannibalizing their products, introducing more products range and all that, and that's all a part of business strategies. Okay. But in the current environment जैसे भी चीजें चल रही हैं और शायद expected है चलने के लिए, I guess I've not had any interaction with them, but I guess कि you prefer not to roll out anything which requires cost. Most many of the stores they are winding up in India also. Yep. That's what I said, But correct? It's a new normal that will come out. Even once the COVID will go away, you will see a lot of things will not remain the way it used to before COVID. Any other driver? So yes, business strategy will have a lot of micro parts to PR this. team. Sorry. PR team. थोड़ा elaborate करोगे पारुल बन सकती है Like for Starbucks, they are very much active on Twitter. And they are promoting their like new strategy. Like recently I saw they posted a video where there was a customer who was deaf, and due to COVID they were taking orders from outside the window. So it came out as a strategy, like they have improved in the like taking orders. They have introduced a digital tab on which you can place orders for physically impaired people. तो फर्स्ट पार्ट में नहीं आ जाएगा बिजनेस स्ट्रेटेजी में? या बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी आ जाएगा, और मतलब आई वुड लाइक टू आस्क कि पीआर टीम जो वर्क करती है, इट्स पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग और व्हाट? Yeah, it's part of advertisement. So if you believe we can write this, yeah, but probably not in the top 5 at least. दोस्तों मैंने इसको नीचे कैटेगरी में लिखा है because think of now अगर PR है भी, let's say they do massive PR in either on the social sites or some other form. If you're saying the current environment is not good enough for people to go and sit, probably have a coffee, then आप कोई भी PR कर लो, probably might not be good enough to attract. हाँ, अगर let's assume अगर ये pandemic नहीं होता, then probably I would have pushed the PR probably in at least in top 5. ठीक है, और the drivers. ठीक है, so this is what we do as a next step. Once we understand the business model, we try and identify some of the drivers. So this has been broken down into 2 parts. One is the brainstorming session where we list down all the drivers, and then we try and
put them into top 3, top 5 buckets, and the others into next 5 or next 3 buckets. So let's do this. So अगर हमारे पास ये है, लेट्स अज्यूम ये लिस्ट है, अब हमें टॉप 3 और नेक्स्ट 3 करते हैं. हाँ जी, सो व्हिच वन वुड यू पुट इनटू टॉप 3 बकेट? मैं 1 2 3 नहीं करना, बट लेट्स टॉप 3 अगर हमें करने हैं तो व्हिच वन यू वुड सिलेक्ट फॉर टॉप 3 फॉर स्टारबक्स? But they are also coming up with a new thought on pickups, like takeaways and all that. मैंने देखे 2-3, so but my personal view is it's a forced strategy. Forced strategy, what I mean, they don't want to do this, but they have no choice to do this in the current environment. But ask yourself, I know in this patch में इतने customers नहीं है Starbucks के, but this is the discussion that we had. Ask yourself, is this going to work for them? Let's assume the COVID goes away, and then now they say, okay, everything comes back to normal. People start resuming to offices. People start coming out the way it used to be earlier. And now they say, okay, we'll operate only at pickup. Not in India. Correct. It will not work for them. I will not pay this much of amount for this taste of a coffee. क्योंकि अब जो मैं प्राइस दे रहा था, उस प्राइस में पहले कॉफी और वो एम्बियंस का सेटअप मुझे मिलता था, वो एम्बियंस अब हटा दोगे बिकॉज आप टेक अवे कर रहे हो, तो मैं ये प्राइस नहीं दूंगा. Yeah, correct. But worldwide Yeah, means it all depends upon to see that what revenue share India has. no, we are only discussing Starbucks India, Deepak. Let's not mix this up, because Starbucks for India has a very different strategy and model vis-a-vis. Because every country they have different strategies in all geographies. Correct. I agree with you, and that's what I'm saying. We are only for the sake of this case study or this program, what we're discussing is Starbucks India, because हमने जो भी discussion करी है, like tea, coffee or other ambient setup, वो सारा India context में करा. Some of these discussions or principles doesn't apply to some of the European markets. So इसलिए अभी भी हम लोग इंडिया पे ही रहेंगे, and इंडिया के लिए ही आंसर करते हैं. Starbucks India. जिसमें टॉप 3 बताइए. Second and third for sure. Second Yes. The standard of living. Next one. आई थिंक अगर मुझे अभी टॉप 3 डालना तो ये डालूंगा जो येलो में. Current top 3 is if I have to pick this, I will probably pick these 3. और अगर मुझे रैंक करने को होगा, of course this probably COVID or after COVID probably might become one in top 3. I'm not saying जो others हैं वो drivers नहीं हैं. I'm just trying to tell you कि why this is important for us, because अगर बहुत सारे drivers होते हैं, we can't, when we're doing forecasting, we can't work on all the drivers because it will be a massive time taking or a costly affair for us from forecasting perspective. They want to try to
We try and identify some of the important or key drivers, and we start working on those rather than working on the entire list of the drivers. Okay, today. Then once you do this drivers, the next part is working on the variables. So the first is revenue growth. So revenue growth comes from broadly two sources. One is organic growth, second is inorganic growth. What do you mean by this? Organic revenue growth is you're expanding your business Yeah, internal and internal expansion expansion. and Inorganic is inorganic. you're capturing. Yeah, which is Either you are primarily I'm just going trying to club this into a correct. Yeah, I mean where you're trying to acquire some already scalable or sizable business, and you automatically get that size. So just an example, if ICICI Bank got 20 branches, they open another 22, and then they open another one. ऐसे करते they go to the, let's use count of 40. From 20 to 40, it's an organic growth. वो धीरे धीरे खुद expand करके grow कर रहे हैं. Inorganic growth is ICICI Bank की 20 branches है, Axis Bank की 20 branches, ICICI Bank ने Axis Bank को acquire कर लिया, तो सीधा 20 से 40 पहुंच जाएगा. So that's called as inorganic growth. Is this clear? Organic, inorganic. Yes. So ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम रेवेन्यू कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन, गेट एन पेन एंड पेपर विद यू. ये बहुत सारी चीज आपको नोट करना पड़ सकता है अगर आपको जरूरत है नोट्स के लिए. सो ट्राई एंड कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी, बिकॉज आई थिंक आप अगर लैपटॉप वगैरह पर नोट करेंगे, आई डोंट नो कितना कंफर्ट होगा आप लोग को. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ मिनट. अगर आपके पेन एंड पेपर नहीं, यू नो, गेट होल्ड ऑफ योर पेन एंड पेपर, गो एंड गेट अ पेन एंड पेपर फॉर यू. 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ आपको. चलिए, so now the first formula
So the first formula, so what does it say? So suppose अगर आपका salary 100 rupees है और next year आपको let's say 2019 का salary 100 rupees और 2020 का salary, तो अगर आपके 10% increment हुआ है, ठीक है, which is G, हम growth बोलते हैं, तो next year की salary कैसे निकलती है? 100 into 1 plus growth rate, correct? कि देख लीजिए, कोई डाउट इस फॉर्मूले में तो पूछिए. Similarly, रेवेन्यू भी ये सेम फॉर्मूला, रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर R1 करता हूँ. R1 फॉर द नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू R0 यानी प्रीवियस ईयर इनटू 1 प्लस G ग्रोथ. ठीक है. And this is what this first formula is. देखिए, डाउट है तो फर्स्ट फॉर्मूला पूछिए. Y on Y is year on year growth, annual growth. ठीक है. हेलो, am I audible guys? Yes, yes. Yes. Okay. And the second is your growth. How do you compute this growth? हमने डिस्कस किया है, ग्रोथ दो सोर्सेस से आता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. यहां तक कोई डाउट बिफोर एक्सप्लेन द एफएक्स ग्रोथ? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कोई डाउट है? सो लेट्स, व्हाट डज इट मीन? हिस्टोरिकली आपकी कंपनी की एवरेज ग्रोथ लेट्स से 7% है. सो दिस बिकम्स माय ऑर्गेनिक ग्रोथ. एंड इस ईयर आपने एक नई कंपनी को एक्वायर किया है, और जिस कंपनी को आपने एक्वायर किया है उसकी ग्रोथ रेट 5% है, एंड यू एक्सपेक्ट कि ठीक है सेम चीज आप रन कर पाएंगे. सो आपके टोटल ग्रोथ एक्सपेक्टेड अभी ये हो गई. दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला मींस. कोई डाउट नहीं आता? Okay. What is FX impact? For example, 2019, your sales, आप INR इंडियन कंपनी हो तो आपकी सेल्स INR में रिपोर्ट करते हो, बट आप एक्सपोर्ट भी करते हो, तो आपकी डोमेस्टिक सेल्स है, डोमेस्टिक सेल्स है 100 रुपीज या INR में ऑफकोर्स, और आपके एक्सपोर्ट्स है 100 USD. 2019 में एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 is equal to, let's say, 60 INR. जो 100 USD है, ये 100 USD कितना हो गया INR फॉर्म में?
सो 2019 की मैं टोटल सेल्स कितनी दिखाऊंगा? अपनी जो पीएनएल में टोटल सेल्स जो होगी वो 100 प्लस 100 which is domestic sales plus 6000 होगा ना? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब सिमिलर 2020 का लेते हैं। 2020 में लेट्स अज्यूम कंपनी का दोबारा से सब कुछ सेम है, डोमेस्टिक सेल्स सेम है, एक्सपोर्ट सेम है, बट एक्सचेंज रेट लेट्स अज्यूम यहाँ पे $1.75 हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन दैट आपका जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है कन्वर्जन के बाद वो विल बिकम and your total sales will come out to be this plus this। ठीक है, अब टेक्निकली आप ग्रोथ रेट निकालोगे तो कंपनी का 24% से ग्रोथ हुआ है। ठीक है, but technically ये growth is not a growth in the sales of the company, is a growth in because of the FX impact। FX से जो foreign exchange, foreign currency में जो movement होता है उसको FX impact बोलते हैं। सो जो कंपनीज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करती है उसमें हम लोग ग्रोथ में ये भी फैक्टरिंग करते हैं। अदरवाइज अगर इसको हटा दो so then your growth is nothing but organic and inorganic, and that's what this formula second formula on the screen means। कोई doubt यहाँ तक before we go to third formula? Any doubt in first two formulas? Okay, so in case no, so the third formula is How to revenue value upon this? Sorry, how to value this organic growth? how to value this. Organic growth. So we discussed, correct? So for example, inorganic or organic? Inorganic will all, I think it will come So to inorganic M&A. is I'm organic। talking about the organic one. so organic ऑर्गेनिक मैंने बहुत सिंप्लिसिटी के लिए अभी आपको जो बताया है ये और रिफाइंड कैलकुलेशन हम करेंगे, बट लेट्स मैंने क्या किया है, लेट्स कंपनी हिस्टोरिकली ग्रो कर रही है ऑन एन एवरेज ऑफ लास्ट 7-5 years कंपनी ग्रो कर रही है लेट्स 7-7.5% पे, and you believe the macro environment will continue to be around very similar to what have been in the last 5 years, so मैंने उस ऑर्गेनिक ग्रोथ के ट्रेंड को 5% लिया। and then you refine this through some calculation जो भी आपको कराई जाएगी आगे जब हम ग्रोथ रेट फोरकास्टिंग करेंगे तो। हेलो सर। हाँ फजल, हेलो सर, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फिर से थोड़ा समझा देना। ऑर्गेनिक होता है जो कंपनी खुद एक्सपैंड करती है, इनऑर्गेनिक होता है जो एक्सटर्नल एमएनए के थ्रू ग्रोथ होता है। कंपनी के थ्रू तो सर मजे को ये भी तो हो रहा है ना सर, ऑर्गेनिक जो है इंटरनल के थ्रू हुआ। ग्रीन में लिखा हुआ है। इंटरनल एक्सपेंशन होगा कैसे? इंटरनल एक्सपेंशन कैसे होगा? बिजनेस बिजनेस अपनी स्ट्रेटजी जो बनाता है उससे ग्रो करता है, कस्टमर्स एक्वायर करता है, और क्या। हाँ हमने एग्जांपल लिया एक्सिस बैंक की 20 ब्रांचेस है, 20 से 21
मल्टीप्लाई विद प्राइस पर यूनिट, ये कौन सा रेवेन्यू है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, दो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं एक ही रेवेन्यू के। यस सर। ये एक मेथड है रेवेन्यू कंप्यूट करने का। अब आपको दूसरा सिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड। अभी से आप फॉर्मूले एब्जॉर्ब करो, इनका यूज कब करना है, कैसे करना है, कौन से सिचुएशन वो आगे आएगा। अभी सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्मूले पे फोकस करो। So any doubt in the first three formulas? ठीक है, नेक्स्ट। नाउ ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इज द क्वांटिटी, ये डिस्कस किया क्वांटिटी। ठीक है, नाउ ये क्वांटिटी कैसे निकालते हैं इज नाउ दिस नेक्स्ट फॉर्मूला कम्स इन। ठीक है, सो नेक्स्ट formula is my capacity into capacity utilization rate. So what does this mean? So T, प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो लेट्स से 100 यूनिट्स है, मैक्सिमम आई कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन अ ईयर। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा 100 यूनिट्स अपनी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ योर कार हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू गो अप टू लेट्स से 180 kilometers per hour, that does not mean you always drive the car at your maximum speed, correct? You do not operate at 100% utilization. The same works with the machineries and the production facility as well. Let's say company on an average produce only 75 units, जो प्रोड्यूस करते हैं ऑन एन एवरेज 75 यूनिट्स करते हैं। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट क्या हो गया? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट मतलब कितनी कैपेसिटी आप यूज करते हैं। सो यू यूज 75%। इसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट बोलते हैं। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट ईयर कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करूंगा। सो दैट्स द फॉर्मूला। मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जितनी मेरी कैपेसिटी है मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, दैट विल गिव मी द वॉल्यूम, क्वांटिटी produced or expected to be produced. Any doubt in fourth formula? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट प्रीवियस ईयर से डिटरमाइंड होगा। हाँ, प्रीवियस ईयर से मान के चलते हैं हम लोग। मैं अभी आपको फॉर्मूले सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स अज्यूम मैं 2020 के एंड में खड़ा हूँ, तो 2020 का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट मुझे पता है। अगर मुझे 2020 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट पता है and there is no announcement or there is no reason for me to believe as an analyst कि कंपनी यूटिलाइजेशन रेट को नेक्स्ट ईयर चेंज करने वाली है। ये अभी सबको पता है कंपनी यूटिलाइजेशन रेट चेंज करेगी बिकॉज पेंडेमिक है, एज वी डिस्कस, कंपनी लॉट ऑफ कंपनीज विल शट डाउन एंड स्टफ लाइक दिस। सो लेट्स अज्यूम वो सब नहीं है। आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि कंपनी नेक्स्ट ईयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट चेंज करने वाले। तो लेट्स अज्यूम कंपनी का करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है और लास्ट 2-3 साल से 70-75 के आसपास ही ऑपरेट कर रहा है और नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है वही ऑपरेट करेगा। सो अब नेक्स्ट ईयर कंपनी जितनी भी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसका मल्टीप्लाई बाय 75% इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कंपनी टू प्रोड्यूस, करेक्ट? Case 2, let's assume company has made an announcement कि next year we are shutting down because of pandemic. We are shutting down. We are out of 5 warehouses. We are shutting down 2 warehouses, or we are shutting down 1 manufacturing unit. अगर वो कर रहे हैं, so what does this mean? Their capacity will go down. जब मैं नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टिंग करूंगा तो उसमें कैपेसिटी को नीचे ले आऊंगा।
because they are shutting down one of the production plant there. और लेट्स से कंपनी अनाउंस करती है कि हम लोग अपनी कैपेसिटी को बंद नहीं कर, मतलब प्रोडक्शन प्लांट को बंद नहीं कर रहे हैं, बट हम अपने जो अर्लियर वी यूज्ड टू ऑपरेट एट 24 आवर्स, हमारी मशीन 24 आवर्स चलती थी, अब हम लोग वी विल मैन्युफैक्चर ओनली 12 आवर्स अ डे. So then they're not decreasing the capacity, but they're decreasing the utilization rate, correct? So basis your research, आप इन पीसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली कैपेसिटी या यूटिलाइजेशन रेट जो ऊपर या नीचे करना होता है उसको करके देन यू कैलकुलेट नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी. Do we have to see the financials also? When you say financials, what does that mean? WIP converting into the capacity. WIP converting into capacity मतलब? Means capitalization of assets, and now those capital assets are increasing the capacity of तो वो ऑलरेडी कैपेसिटी में इंक्लूडेड है ना. एनी एसेट व्हिच इज बीइंग कैपिटलाइज्ड वो कैपेसिटी में इंक्लूडेड है ना. No, some of the assets will be there in WIP which are not. Give me an example of such asset जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो. Because for example, many of the machineries which are all the products are not all the parts are not being come up and they are not being assembled and to utilize this capacity of that machine. In the next year it is going to be, तो कैपेसिटी में ऐड हो जाएगा ना. वो अगर आपके पास कुछ स्पेयर पार्ट्स आ गए हैं वो असेंबल नहीं हुए हैं तो अभी करंट कैपेसिटी में नहीं है, बट जब वो असेंबल हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर कैपेसिटी में ऐड हो जाएंगे. बट फॉर उसके लिए हमको लास्ट ईयर की कैपेसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी. व्हाट आई सेड कि आप फोरकास्टिंग में what this capacity, for which year we are talking about this capacity on volume terms? We are talking about the capacity for the next year, bro. Next year capacity निकालने के लिए मैं पहले पिछले साल की capacity तो देखूंगा. That will be my base. And then उस कैपेसिटी में मैं प्लस और माइनस करूंगा जो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्टेड है. फॉर एग्जांपल कंपनी की करंट कैपेसिटी 100 यूनिट्स है एंड आई कम टू नो, ठीक है, कि कंपनी के पास अभी कैपेसिटी 100 यूनिट्स है बट कंपनी के पास एक और मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स आ गए हैं जो नेक्स्ट क्वार्टर तक असेंबल हो जाएंगे. यानी नेक्स्ट क्वार्टर तक असेंबल हो जाएंगे विच मींस नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा. कंपनी फॉलोज जैन टू दिसंबर ईयर. सो मुझे पता है कि कंपनी के नेक्स्ट 2-3 महीने असेंबल होकर वो एक मशीनरी खड़ी हो जाएगी और मशीनरी की अनदर 20 यूनिट्स की कैपेसिटी है एक न्यू मशीनरी की. तो मैं मेरा बेस 100 यूनिट्स है विच मींस नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का मुझे पता है कंपनी कैपेसिटी 100 यूनिट्स है. कंपनी उसमें से कोई मशीन माइनस नहीं कर रही है तो 100 विल कंटिन्यू टू बी 100 प्लस कंपनी इज एडिंग अनदर मशीन जो नेक्स्ट 1 या 2 महीने में फुल ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी या अपनी कैपेसिटी लेवल पे आ जाएगी. तो मैं 120 लूंगा नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टिंग के लिए. केस 2, कंपनी का लास्ट ईयर 100 यूनिट्स था, कंपनी अनाउंस किया पेंडेमिक की वजह से हम एक मशीन को बंद कर रहे हैं, ठीक है, और पर मशीन की कैपेसिटी 20 यूनिट्स, तो मैं नेक्स्ट ईयर फोरकास्टिंग के लिए 80 लूंगा. वो 80 कैसे आया? 100 एज अ बेस माइनस 20. तो मैं प्रीवियस ईयर के when I say previous year, I'm not referring to one single year. I'm referring to an average of previous 5, 7, 10 years. उसके एक बेस को लेके उस पर प्लस और माइनस करूंगा बेसिस मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर में. बेसिस आपको कुछ रिसर्च करके कुछ डेटा मिला भी है, कोई नॉलेज मिली भी है. अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके बेसिस पे मैं जो बेस नंबर मेरे पास है उसमें प्लस और माइनस जरूर करूंगा, तभी तो मेरा फोरकास्टिंग कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. People, you're with me on this? Is that clear? Yes. ठीक है. Any doubt in force formula? Capacity into capacity utilization rate. ठीक है.
अब ये कैपेसिटी कैसे निकालना है, यही मैंने अभी सिखाया। नेक्स्ट ईयर का कैपेसिटी में कैसे निकालूंगा, प्रीवियस ईयर कैपेसिटी, ये प्लस है फॉर्मूले में, रियल वर्ल्ड में हम प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर की कैपेसिटी कैसे निकलेगी, प्रीवियस ईयर कैपेसिटी प्लस और माइनस द चेंज। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि प्रीवियस ईयर की कैपेसिटी 100 यूनिट्स है और मुझे इंफॉर्मेशन है कि कंपनी नेक्स्ट ईयर एक मशीनरी असेंबल कर लेगी, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, कंपनी ने अनाउंसमेंट करा कि पेंडेमिक की वजह से हम कुछ मशीनरी बंद करेंगे, शट डाउन कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन हाउस, या एक प्लांट को बंद कर रहे हैं, तो 100 माइनस 20 हो सकता है। Any doubt in fifth formula, which is capacity? Any doubt in this? कैपेसिटी एडेड जो है वो करंट ईयर का कैपेसिटी हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट ईयर पर एडेड इज नेक्स्ट ईयर। तो वो तो कैपेसिटी अभी तक निकला ही नहीं है, तो फिर किसने कहा नहीं निकला? कैपेसिटी जो नेक्स्ट ईयर वाला जो है, वो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो प्लस करो, अगर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे तो मत प्लस करो। Any other doubt? Next, capacity utilization rate. So capacity utilization rate for the next year is the capacity utilization for the previous year plus minus change. I repeat, capacity utilization rate for the next year is equal to capacity utilization rate for the previous year plus and minus change. अब अगेन यहाँ पे माइनस नहीं है, बट रियल वर्ल्ड में ये भी होता है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे करंटली कंपनी का प्रीवियस ईयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है। कंपनी ने अनाउंस किया कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक हम अपनी प्रोडक्शन या अपनी कैपेसिटी को 10% डिक्रीज करेंगे। So next year I will do the calculation forecasting basis 65%. Previous year minus expected. Clear? Any doubt in this slide except the last formula? Except the last formula. Any doubt in this slide? हेलो हेलो How's the much? ऋषभ सर, ये वन क्या है? कैपेसिटी ईयर ईयर माइनस वन, ये वन क्या है? Y करंट ईयर है, तो Y माइनस 1 का मतलब है प्रीवियस ईयर। ओके, ठीक है सर। जैसे हम लिखते नहीं R1 R0 वैसा है ये, तो वो फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिक्स वाला नहीं है, वो एक नोटेशन करने का तरीका है। जैसे हम बोलते हैं ना कि करंट प्राइस इज P1, प्रीवियस ईयर प्राइस इज P0, ऐसा उसको नोट करने की कोशिश करेंगे। तो y माइनस 1 इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर। हाँ, y माइनस 1 मीन्स प्रीवियस ईयर, y मीन्स करंट ईयर। What is BPS? BPS is basis points. 100 basis points means 1%. जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो एक्सेल में ये BPS क्या होता है, 1 BPS is equal to 100 BPS is equal to 1%, basis points बोलते हैं इसको। तो ये 10% मतलब क्या हो गया, 1000 BPS, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1000 BPS।
जैसे इंडिया में परसेंटेज बोलते हैं, some of the European markets में परसेंटेज को BPS बोलते हैं. It's a notation or it's a unit to express the percentage. Okay. Anji, any doubt on this slide except the last formula? आंसर ओ क्या है यहाँ पे इसमें प्राइस y -1 1 प्लस y o डैश y, ये वो क्या है? Year on year. ऑर्गेनिक ईयर ऑन ईयर. Year on year. YOY is year on year. Anji, any other doubt? Okay. तो ये प्राइस पर यूनिट जो है ना निशान से, इसे एक मुझे एग्जांपल दे पाएंगे क्या? इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है. ये किसमें प्राइस डाउट हो पर रहा है? यूनिट, प्राइस पर यूनिट y तुमको माइनस सिखाया ही नहीं है मैंने अभी तक. प्राइस पर तो सिखाया ही नहीं है. ठीक है. So प्राइस पे बात म्यूट पे जाओ, आप बहुत नॉइज आ रहा है आपके बैकग्राउंड से. So price per unit, price per unit. So let's say in 2019 में कंपनी का सेलिंग प्राइस 10 रुपीज था. 2020 में कितना प्राइस होगा नेक्स्ट ईयर वो निकाल रहे हैं हम लोग. तो नेक्स्ट ईयर प्राइस कितना होगा? कंपनी ने अगर ऐसे 2% का इंक्रीमेंट करा प्राइस में, या 10% का इंक्रीमेंट करा प्राइस में, तो दिस इंटू 1 प्लस दिस ऐसे होगा. प्रीवियस ईयर कंपनी 10 रुपए का प्रोडक्ट बेचती थी और कंपनी ने कहा कि 10% हम प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर मेरा प्राइस क्या निकलेगा? क्लियर है यहाँ तक? दिस इज प्राइस पर यूनिट जो सुभाष तुम पूछते हैं. अभी 10% बहुत सारे रीजन की वजह से आ सकता है. कुड बी इन्फ्लेशन रेट, कुड बी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट ईयर से कोई टैक्स रेट आ जाएगा. ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में कुछ मार्केट कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस इंक्रीज कर दिया है, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से आप प्राइस इंक्रीज कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हो. There could be n number of reasons that you as a research analyst need to find out कि बॉस कंपनी का जो नेक्स्ट ईयर प्राइस पैटर्न है, would the company be able to operate at the same price pattern, or the company would, or it's likely for a company to increase the price. The other method of calculating this, आप historical average देखते हो. हिस्टोरिकल एवरेज में आपको दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज कंपनी हर साल 10% के एवरेज पे प्राइस को इंक्रीज करती है. So then of course you can increase the price by 10%. ठीक है. So some of these methods या सोर्सेज है जिससे आप इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हो और अकॉर्डिंगली कंपनी का प्राइस नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है वो एस्टिमेट करते हो. कोई डाउट यहाँ तक? Any question on this?
इसको कैलकुलेट करने का भी फिर अलग फॉर्मूला होता होगा ना कि हमारा कितना कितना चेंजेस बिजनेस में हुआ। किसी का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? ये जो चेंज इन परसेंटेज ग्रोथ है ऑफ प्राइस, सो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते होंगे ना, दैट इज कॉस्ट और यूसेज, एफएक्स रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ, सो मैं वही बता रहा हूँ. सो लेट्स अज्यूम कंपनी का 2016, 2017, 2018, 2019, ये तो कंपनी का पास्ट हो गया. अब मान लो ये पास्ट का डेटा आपके पास कंपनी का सेलिंग प्राइस का अवेलेबल था. आपके पास ये डेटा अवेलेबल है कंपनी का सेलिंग प्राइस. आपने ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंप्यूट करके देखा कि ऑन एन एवरेज फॉर लास्ट 5 years कंपनी का प्राइस जो इंक्रीज होता है पर ईयर वो 10% पे होता है. अभी जब 10% कंपनी ने प्राइस इंक्रीज किया तो उसमें सारे फैक्टर्स कंसिडर हो गए ना पारुल. गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स, इन्फ्लेशन, कॉम्पिटिटर्स, रॉ मटेरियल सब इंक्लूड हो गया कि नहीं हुआ? वो हो गया है, बट हम इस साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. करेक्ट. तो अब फोकस कर अगर रहे हैं. आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है इन चीजों के अलावा, जो पिछले 5 साल में जो इन्वायरमेंट रहा है वही अगले साल इन्वायरमेंट है, तो आप इस 10% को रिलाई कर सकते हो. यस. केस 2 जो अभी है, जो पेंडेमिक है, बिकॉज दिस वाज नॉट समथिंग दैट कंपनीज हैव एक्सपीरियंस और कॉर्पोरेट इंडिया कॉर्पोरेट हैव एक्सपीरियंस इन लास्ट 5, 10, 20 years. करेक्ट. तो अब उसकी वजह से ये 10% पे क्या प्लस या माइनस करना पड़ेगा, प्रॉब्ली वो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा. लेट्स से हम स्टारबक्स का एग्जांपल ले रहे हैं. स्टारबक्स ऑन एवरेज 10% प्राइस इंक्रीज करता हुआ आ रहा है पिछले 4 साल से, 5 साल से इंडिया में. तो will they be able to increase the price for the next year? The answer is no, because अगर वो अब पिकअप दे रहे हैं, वो एम्बियंस नहीं दे रहे, तो वो प्राइस they can't increase the price. Correct. So then I need to do that evaluation. Is this company in a situation to increase the 10% price for the next year? And as an analyst आपका क्या व्यू है? And then you बिलीव कि नहीं इंक्रीज नहीं कर सकते तो आप इसको डिक्रीज करो. इफ यू बिलीव वो कर सकते हैं तो आप उसको सेम नंबर्स को करो. अगर आपको लगता है नहीं नहीं वो तो 10 का इस बार 20% इंक्रीज कर जाएंगे तो 20% फैक्टर करोगे. Parul, is that clear? Yes, yes, understood. Means I just wanted to understand, like, it is really complex to calculate and Yeah, it's very decide complicated. on pricing. It sounds easy, but to quantify such factors Yes. is And complicated. and बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं पारुल जिसको क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे. And that's where the experience of the research analyst comes into picture. Guys, I've told you earlier also beginning of this session में ये जो फोरकास्टिंग आप सीख रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि पारुल फोरकास्ट करे, कि मैं फोरकास्ट करूंगा, फजलू फोरकास्ट करेगा, सबका आंसर एग्जैक्ट 10.2 आ जाएगा. नो, that's not going to happen. When 3 different research analysts, and those 3 are experienced research analysts, let's assume one is McKinsey, Moody, or let's assume let's assume UBS. These are some of the big research houses across the world. So let's assume if they did try and start doing forecasting, and if their experienced research team is forecasting for the same company for the same period, जरूरी नहीं है सबका सेम आंसर है. सबका अलग अलग आंसर आएगा. क्यों अलग अलग आंसर आएगा? बिकॉज दे बिलीव समथिंग डिफरेंट. बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सब्जेक्टिव होंगे. ठीक है. एवरीबडी विल हैव देयर ओन एजम्पशन, ओन फॉर्मूलाज, ओन कैलकुलेशन, ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट. उसकी वजह से सबके आंसर अलग अलग आएंगे और तभी मार्केट में कोई बाय बोलेगा, कोई सेल बोलेगा. that's where the market operates. So you need to have that mindset very open that this forecasting will not give you formulas to get the exact answers. These will give you tools. उसके बाद there is a human brain that is required. And इसीलिए ये एक जॉब या फील्ड ऐसी है जिसमें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं इंटरवीन कर पाया है. एंड आई डोंट थिंक कर भी पाएगा, बिकॉज
जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस बिजनेस इस जॉब प्रोफाइल्स को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है। क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूलाज कैलकुलेशन ओरिएंटेड होता तो मैं एक रोबो बिठा सकता हूँ वहां पे, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिठा सकता हूँ, मैं एक एल्गोरिथम बना सकता हूँ, सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। बट एक बेस कैलकुलेशन के बाद यू नीड एन ह्यूमन ब्रेन टू मेक दोज एडजस्टमेंट व्हिच इज वेरी सब्जेक्टिव। एंड वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है, धीरे धीरे आपको जितनी कंपनी समझ आती है, जितना उसका मैक्रो एनवायरनमेंट समझ आता है, उससे आता है। ठीक है, सो अब देखोगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट डिबेट होना शुरू होगा। डिबेट मतलब बिटवीन आवरसेल्व्स आप देखोगे इस बैच में, व्हेन वी चेंज वन ड्राइवर, वन पर्सन विल से नहीं सर आई बिलीव इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, दूसरा बोलेगा नहीं सर आई बिलीव इसका इम्पैक्ट होगा। एंड there's a possibility both will still have the same view, and probably once will say no I will not increase, another will say I will increase, and that's where the difference comes out। एक एक वेरिएबल पर डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, that's where the real market works। So yes, it's very complicated, and that's the reason these are some of the heavy paid profiles in the markets, uh, uh, and these are very complicated calculations। चलिए, कोई डाउट इस स्लाइड पे? Any of the formulas? Any doubt on this slide? हाँ जी, कुछ पूछना है on this first set of formulas जो मैंने आपको दिए from a revenue forecasting perspective? Price per unit. The last one. In year-on-year growth, we have already. अरे हाँ, sorry, मेरा FX impact रहेगा, sorry, I missed that. So one is the E10%. Now No, in that formula, if you can please go to that slide. This formula has year-on-year growth, and in year-on-year growth, we have already taken the impact of FX. So you want to say that unit पे भी impact आएगा वो? May or may not. Again, taking the impact of FX. Yeah, वो FX impact वो है कि अगर कोई incremental FX impact, जैसे ब्रेक्सिट जब हुआ था, जब ब्रेक्सिट हुआ था, हमने कुछ कंपनीज के जो एक्सपोर्ट्स थे, स्पेशली इनटू दोज कंट्रीज, वहां पे एक्स्ट्रा FX impact लिया था। देखो ये Y on Y जो ग्रोथ है, इसके अंदर जो नॉर्मल FX impact है वो इंक्लूडेड हो गया है। इसके अंदर जो नॉर्मल FX impact है वो इंक्लूडेड है। लेट्स अज्यूम पिछले 5 साल से आपका एक नॉर्मल FX इम्पैक्ट है आपके एक्सपोर्ट्स में, वो इसमें इंक्लूडेड हो गया। पर लेट्स अज्यूम कुछ मैक्रो इवेंट में या कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अनाउंसमेंट हुई है, जिसकी वजह से आप अगले साल सिर्फ FX में, बाकी फैक्टर्स में नहीं, सिर्फ FX में कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये आपको वो एबिलिटी देता है। बट लेट्स अज्यूम इफ यू बिलीव कि नहीं मेरा FX इम्पैक्ट इस Y on Y में इंक्लूडेड हो गया है, तो अलग से प्लस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। Deepak, is that clear? No, sir. प्रोडक्ट पे एक ग्रोथ पे हम FX इम्पैक्ट ले रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे FX इम्पैक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट पे कहाँ लिया मैंने? प्राइस पर यूनिट ना, वो प्रोडक्ट थोड़ा प्राइस है ना, वो प्रोडक्ट तो वॉल्यूम है। मींस पर यूनिट प्राइस तो निकलेगी एक प्रोडक्ट की। हाँ, प्राइस कैसे निकालोगे? उसी पे तो लिया, प्राइस पे तो लिया, और किस पे लिया? और कहाँ लिया? मेरा ये जो टोटल रेवेन्यू निकले, ये देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला अलग है सर, ये जो ऑरेंज में है ये अलग कैटेगरी अलग है। तो आप ये जो फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज हैं और जो सेकंड कैटेगरी है, इनको मत कंबाइन करो। अगर आप यहां से देखोगे, जो सेकंड फॉर्मूला ऑनवर्ड्स है यहां से, इसमें कहीं पे FX लिया है मैंने? सिर्फ एक ही बार तो लिया है यहाँ पे। मेरा रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी में मैंने कहीं भी FX नहीं लिया, सिर्फ प्राइस में तो लिया, एक ही बार तो लिया है। In this price, what we want to say on YOY growth?
प्रोडक्ट का प्राइस, let's assume if you're selling your product in international market, 1 unit you're selling at $1 and next year you're selling the product 1 unit at $1.5, तो $0.5 का जो इंक्रीज हुआ है वो एफएक्स इम्पैक्ट है ना, प्राइस इंक्रीज है ना. No, it will be growth only. FX impact will be the impact on exchange rate if it is applicable. If you are selling the product across the boundaries, then on. Correct. So Yes, because year on year growth, for example, you are selling in the last year it was $1, now it's $1.5. Then this 0.5 is the year on year growth, and after that we are taking the impact. We'll see that what is the position of forex in terms of Indian currency in the base currency. Then it will come to this FX impact. That's what I understand from this formula. करेक्ट. सो जो वाई ऑन वाई ग्रोथ है, इस वाई ऑन वाई ग्रोथ में भी एफएक्स इंक्लूडेड है. ठीक है, आर यू विद मी ऑन दिस? लेट्स से लास्ट 5 इयर्स का मैंने एवरेज निकाला, उस 5 इयर्स में कंपनी ने एक्सपोर्ट किया था, डोमेस्टिक भी किया था, तो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो एफएक्स को कंसिडर करता है. यहां तक आर यू विद मी ऑन दिस? Yes. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर लेट्स अभी 2020 के एंड में ब्रेक्सिट अनाउंस हो गया. One month. This 1 year on year growth. वो प्राइस को तो मीन्स because now what I understand, this is at company level, the orange one, and this is the product level. On this product level, ऑरेंज सर, आप ऑरेंज को भूल जाओ अभी के लिए, हमने ऑरेंज नहीं किया मान के चलो. ऑरेंज है एंड दिस इज ए that's what I am differentiating. It has nothing to do with this. हाँ, तो मेथड ए को भूल जाओ, आप मेथड ए को भूल जाओ अभी के लिए. अब बताओ इस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में एफएक्स नहीं है. अगर इफ आई फॉरगेट द ऑरेंज वन, नहीं होना चाहिए. बोथ वेज ऑपरेट कर सकता है. अगर आप कहते हो ईयर एंड ईयर में मैं एफएक्स नहीं ले रहा हूं और मैं यहां ले रहा हूं, तो भी एक बार काउंट हुआ, यहां तक ठीक है. दूसरा, लेट्स अज्यूम एक कंपनी रेगुलरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती आ रही है और डोमेस्टिक सेल्स भी करती है. ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहां से आया? ये ईयर एंड ईयर ग्रोथ कंपनी के लास्ट 5 साल 4 साल के एवरेज प्राइस से हमने कैलकुलेट किया है. Yes. तो कंपनी के लास्ट ईयर के मैंने 5 साल का जब डेटा देखा तो मुझे एक 10% का प्राइस इंक्रीज दिखा. Now there are two ways to look at it. What 10% price I could say only domestic sales का है? No, with the total sales. I'm saying considering the impact of import and export of forex. मैं दोनों साइड से देख सकता हूँ दीपक. वन इज आप फर्स्ट टोटल सेल्स वाला ले लो जो तुम बोल रहे हो. लेट्स assume the y on y जो टोटल सेल्स, अब इस टोटल सेल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक भी इंक्लूडेड है, तो यानी ये y on y के अंदर एफएक्स इंपैक्ट इंक्लूडेड हो गया ना. फिर अगर मैं टोटल सेल्स का y on y ले रहा हूँ तो are you with me on this or not? Then it's okay. Then it is that orange has a correlation with this gray, which I am not able to means. अगर कॉन्सेप्ट ऑरेंज को भूल जाओ, आपने ऑरेंज नहीं किया अभी के लिए, भूल जाओ ऑरेंज को अभी के लिए. ऑरेंज को 1 मिनट भूल जाओ, नहीं किया हमने, मान लो. ओके, छोड़ दो ऑरेंज को, मैं सिर्फ ग्रे वाले पे फोकस. ईयर ऑन ग्रोथ निकाल अभी कंपनी की, एक मिनट जाओ, कंपनी की जो सेल्स है, मैं टोटल सेल्स देखता हूँ. कंपनी की टोटल सेल्स कहाँ से आएगी? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स. ठीक है. सो लेट्स assume ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, एंड देन दिस वुड बी ए प्लस बी. ठीक है. अब अगर मैं y और y निकाल रहा हूं टोटल सेल्स पे,
if I'm calculating y on total sales, तो दीपक ये बताओ, इस y on y कैलकुलेट करके पिछले 5 साल के डेटा पे 10% आता है, क्या इसमें एफएक्स इम्पैक्ट इंक्लूडेड है, हाँ ये ना? यस। करेक्ट, यही समझा रहा हूँ। तो अब फिर मैं अलग से एफएक्स इम्पैक्ट नहीं लूंगा। तो इस फॉर्मूले में आप मान के चलो ये एफएक्स हटा दो, इसकी जरूरत, आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना हो गया। बट आपको इतना ध्यान रखना है, फिर ये वाई ऑन वाई ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करना है। यहां तक कोई डाउट है बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वर्जन? No, not is clear that अब because अगर हम टोटल सेल्स में ले रहे हैं that's okay. करेक्ट। अब सेकंड इज, फॉर सम कंपनीज we don't do this on total sales, we do it on this domestic sales. अभी जो वाई ऑन वाई है, ये वाई ऑन वाई एफएक्स इम्पैक्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा, बिकॉज एक्सपोर्ट तो आया ही नहीं ना इसके अंदर, तो मुझे अलग से ऐड करने की जरूरत है। Yes. यही दोनों सिखाए। नाउ हमें कौन सा कब यूज करना है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे या जो हम क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। यू शुड बी रेडी विद बोथ, विद द लॉजिक्स कि कब मुझे वो यूज करना है, कब मुझे वो यूज करना है। एंड एंश्योर करना डबल काउंटिंग नहीं हो, डबल काउंटिंग नहीं, यानी अगर एफएक्स का इम्पैक्ट को आपने वाई ऑन वाई में ले लिया है तो दोबारा से एफएक्स को नहीं ऐड करें, और अगर एक वाई ऑन वाई में नहीं लिया है और कंपनी के एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स हैं तो एक बार अलग से ऐड करें। Yes, yes. And the last formula, if we take the last formula including the FX impact, then there should be a disclaimer that we considering export import is not being considered in the total sales. Correct, correct. Y on Y is not considered on total sales. Y on Y is considered on the domestic sales. तो मुझे FX impact अलग से लूंगा। अगर Y on Y को मैंने ऑलरेडी टोटल सेल्स पे कर लिया तो उसके अंदर FX impact इंक्लूडेड है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, yes. हेलो Now it's सर। clear. एक मिनट रुको फर्स्ट। अब ये मेथड ए है जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, और ये मेथड बी है जो ग्रे वाला है। इन दोनों का आपस में कोई लिंकेज नहीं है, ये दो अलग सेपरेट मेथड्स हैं और दोनों में एक बार एफएक्स इम्पैक्ट लिया हुआ है मैंने। अब दीपक, is this complete picture clear before I go to Fazlul? Yeah, yes. It's the only confusion I have in that. ठीक है, हाँ फजल बोल। So what is the meaning of FX impact? फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी में जो ऊपर नीचे होता है। सर मैं ये जो कर रहा था वाई ऑन वाई ओ वाई ग्रोथ जो है, ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लस मर्जर एक्वाइजिशन, ये इम्पैक्ट प्लस एफएक्स इम्पैक्ट जो है ये टोटल सेल्स पर है, ये क्या ऑरेंज कलर में जो है निकाला गया है। हेलो, अभी तो वही तो बताया कि अगर वाई एंड वाई को आप टोटल सेल्स पे ले रहे हो तो अलग से एफएक्स इम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वाई एंड वाई को डोमेस्टिक सेल्स पे लिया तो एफएक्स इम्पैक्ट अलग से ऐड करने की जरूरत है। दोनों सिनेरियो बता दिए, दोनों पॉसिबल है। कौन सा और वन करना मोर है थिंग वो आप बोलो। सर, ये जो है कैलकुलेशन ये किस स्टेप पर किया जाएगा? वो सिखाऊंगा बाद। किस स्टेप? अभी से फॉर्मूला समझो। सर इनका सारा एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब बहुत आगे है, सब होगा, टेंशन मत लो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला का लॉजिक समझो। ये से कह रहा हूँ कि आइडेंटिफाई ऑफ द वेरिएबल्स था, उसके बाद का आइडेंटिफाई वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई किया रेवेन्यू। अब रेवेन्यू की कंप्यूटेशन सिखा रहा हूँ, उसी थर्ड स्टेप में ये सब। ठीक है, लास्ट टाइम एनी डाउट ऑन दिस स्लाइड? Any of the formulas on this slide? ठीक है, ठीक है. So in case no, so we'll stop here. We'll continue tomorrow the same
forecasting. ठीक है चलिए, thanks, bye.